हेलो एवरीवन। अगर आप AWS सर्टिफिकेशन फॉर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कंसाइज एंड क्रिस्प नोट्स दे रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले हम रीड आउट करेंगे। सो अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please subscribe and like the video. Let's start. Introduction of the AWS में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि what is cloud computing. Cloud computing is on-demand IT resources है, delivered over the internet, pay as you go. Okay, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है हमारे लिए इंटरनेट की वो सर्विस जो हम अपनी ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स को क्लाउड पे अपलोड करते हैं और पे एज यू गो कॉन्सेप्ट पे जितना आपने यूज़ किया उतनी आपको प्राइसिंग देनी पड़ेगी। सो द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ द IT resources and application via the internet with the pay-as-you-go pricing. No need to make a large setup front investment in hardware and spend the time to managing it. आपको बहुत सारे हार्डवेयर से टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है मैनेजमेंट करने के लिए. So cloud is beneficial for that. Cloud is also having a right type and size of computing resources for your workload, and cloud is also providing many resources as your end almost instantly and pay only for what you use. AWS also owns and maintains the network connected hardware. You just provision and use what you need. So basically, cloud is something like in our home, we are using electricity. Just take the example, electricity is in a power grid and we are just using electricity by plug-in. Okay, plugging for mixer, plugging for charging laptop, किसी भी चीज़ की हम प्लगइन कर रहे हैं तो हम उसकी लिए हमारे पास यूनिट कंज्यूम कितनी यूनिट कंज्यूम की है उसका बिल आता है. सो सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग वैसे ही है. वॉट एवर भी रिसोर्सेज वी यूज वी हैव टू पे फॉर दैट. ओके, तो सिक्स एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. एग्जाम एस्पेक्ट से ये रिकॉग्नाइज करना है दीज ईच ऑफ द दीज टाइप्स दैट what are the advantages of cloud computing. Variables and capital expenses, economics of scale, stop guessing capacity, focus on business differentiator, increase speed and agility, go global in minutes. So ये सारे एडवांटेज हम अभी डीप डाइव में पढ़ेंगे. कॉस्ट स्टोरी की द कॉस्ट स्टोरी जिसमें वेरिएबल एंड कैपिटल एक्सपेंसेस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स रीड आउट करते हैं. दैट treat capital expenses for the variable operational expenses. No need to invest heavily on the data center and servers, knowing the how you will use. आपको ये एक्सपेंस जो कैपिटल एक्सपेंसेस आते आते हैं हमारे डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए, सर्वर्स को मैनेज करने के लिए. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड वी नीड टू डू दैट. हमें वो सिर्फ सारी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इन लेस इन्वेस्टमेंट हमारा काम हो जाता है. हमें सिर्फ उतना ही पे करना है जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स में भी सेम ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स फ्रॉम द मैसिव अकाउंट्स ऑफ द स्केल बाय यूजिंग अ क्लाउड कंप्यूटिंग अचीव अ लोअर वेरिएबल कॉस्ट देन you want you would get your own uses from the hundreds of thousands of customers aggregated in the cloud. Providers of AWS achieve higher economics of scale, which translates into the lower price per you. Okay, so stop guessing the capacity, increase speed and agility. इलास्टिसिटी एंड स्पीड्स की अगर हम बात करें तो हमें कैपेसिटी गेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्लाउड में. वाई? बिकॉज वेन एवर वी आर इम्प्लीमेंटिंग हार्डवेयर ऑफ डेटा सेंटर और सर्वर वी हैव टू गेस व्हाट कैपेसिटी वी हैव टू रिक्वायर्ड. बट क्लाउड में ऐसा नहीं होता है. क्लाउड में हम कैपेसिटी हमें जितनी नीडेड है हम उतनी स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स. ठीक है. इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी. तो न्यू IT रिसोर्सेज हमें जस्ट एक वन क्लिक में मिल जाता है. टू रिड्यूस द टाइम्स, इट्स रिड्यूस टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू द डेवलपर्स विद इन फ्रॉम वीक्स टू द मिनट्स. ठीक है. और cost and time it takes the experiment and development that drop significantly and results in the dramatic increase in speed agility for the organization. So
फोकस एंड ग्लोबल रीच, जो हमें सिर्फ बिजनेस की डिफरेंशिएटर पे फोकस करना है। सो बिजनेस विल हैवी लिफ्टिंग ऑफ रैक, स्टैकिंग, पावर सर्वर्स, जब हम डेटा सेंटर्स क्रिएट करते हैं तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है। सो बेसिकली इन इस लाइक इस पे स्पेंडिंग अ मनी ऑन ऑल दीज थिंग्स, we directly have to focus on the what we are building, what are the business differentiator we have to focus on the projects only. Go global in minutes, easily deploy application to multiple location around the world with is just one click. ओके, हम ग्लोबली अपने एप्लीकेशंस को जस्ट एक वन क्लिक में डिप्लॉय कर सकते हैं। ग्लोब एंड डिलीवर्स लो लेटेंसीज प्रोवाइड करता है, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और इन मिनिमल कॉस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिमल कॉस्ट। Going global used to be something only for the largest experience cloud afford. Cloud computing demonstrates this ability and make it possible for you any organization. Okay. Cloud computing deployment models. The two models exam focus on all in cloud and hybrid. So cloud के deployment model जो होते हैं all in cloud based और hybrid deployment. So as name suggests, we are getting all in cloud based means कि fully deployed in a cloud. Every component of the application run on cloud. Apps are either created in the cloud and migrated from the existing informations to gain the benefits. Can you build on a low level infrastructure pieces or a high level services that abstract many advantages and architecture and scaling? Okay. And hybrid में क्या होता है, एक common approach है taken by the many enterprise connect infrastructure application between a cloud based resources and existing resources that are not located in the cloud, typically in an existing on-premises data centers. Okay, so according to the exam tape, I can say the hybrid model is an architecture pattern connecting a cloud-based resources with existing non-cloud resources. Remembering this exact wording, AWS Global Infrastructure, reasons and availability zones, the foundation of every architecture question. हर एक आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स क्या हैं। सो बेसिकली एडब्ल्यूएस के रीजन्स क्या होते हैं, if physical geographic location consisting of a clusters of data center, each region is completely independent and isolated from the other regions. This achieves the greatest possible fault tolerance and stability. Resources are not replicated across the region unless you choose to do so. Okay. Availability zones क्या होते हैं, one and more data centers within a region isolated from the failures in other availability zones and provide inexpensive low latency network connectivity to others available is in the same region. Okay, so just take example, think of that. रीजन क्या है, एक सिटी है, अवेलेबिलिटी जोन क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेबरहुड है। ठीक है, जस्ट लाइक अ डेटा सेंटर क्लस्टर एक ही सिटी में। ठीक है, क्लोज इनफ टू द फास्ट कम्युनिकेट फॉर अ बेटर नेबरहुड पावर और cut doesn't affect the others. Okay, so high availability is a deploy redundant instances of each tier web app database across two and more distinct availability zones. This is the example which you have to remember. Security and compliance are shared responsibility between AWS and your organization. Security is cloud security of AWS is the number one priority. AWS manages the security of the underlying infrastructure. Your organizer secure anything it's deploy on AWS, redundant and layered controls, continuous validation, testing, heavy automation, keep infrastructure monitoring and protected 24 hours. ठीक है, compliance क्या होता है, both AWS and the customer becomes responsible for the IT environment. Once workload move to the AWS, customer may maintain adequate governance over their entire IT control environment. AWS compiles with the SOC 1, SOC 2, SOC 3 and all those things. So these are the security and compliance. Organization retain a complete control and ownership
over the region where their data lives. Key for the data residency questions. This will be the important tip for the exam. Now accessing the AWS platform, there are three doors into the same set of AWS cloud services. क्लाउड AWS की प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए हमारे पास थ्री वेज होते हैं। एक सबसे पहला है AWS मैनेजमेंट कंसोल, देन AWS CLI एंड AWS SDK। मैनेजमेंट कंसोल एक वेब एप्लीकेशन है जो AWS क्लाउड की सर्विसेज यूज करता है। हमें इस सर्विस प्रोवाइड देयर ओन कंसोल एक्सेस मेन कंसोल and also shows the accounts billing information and all. CLI एक यूनिफाइड टूल है AWS managed by AWS, which with one tool download and configure or control multiple services from the command line and accurate them through these scripts. AWS SDK क्या है? Provide an API that interact with the AWS web services with the fundamentally make up AWS platform, support many languages, take the complexity out of the coding, raw HTTP calls and all. So SDK removes the need to make new HTTP calls to service endpoints directly. They handle that complexity for you. This will be the tip. Core compute services, the engines that run on applications. Okay, AWS provides some more compute services. बहुत सारे compute services provide करता है जैसे Amazon EC2, auto scaling, AWS Lambda, EC2 load balancing, AWS Elastic Beanstalk। ये सब हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी नॉर्मली गो थ्रू करते हैं that EC2 is a reliable compute capacity in the cloud, obtain and configure virtual servers with a complete control over the networking and access. Auto scaling a scale AWS EC2 capacity up or down automatically according to the conditions you define to match a dynamic workload demand and optimize cost. AWS Lambda is a zero administrator compute platform backend runs your code on it, your feeds, distributed instance across the multiple availability zones for the high availability. Load balancing used for the load balancing loads or load balancer achieving a greater and fault tolerance. Elastic Beanstalk, the fastest, simplest way to web app running. Upload your code. AWS handle provisioning, load balancing, auto scaling, monitoring everything. So Elastic Beanstalk still give you full access to and control over the underlying resources at you anytime. Okay. Core networking services क्या क्या है? Connecting your resources to each other and to the world. Basically networking क्या है? Connecting any resources to the world. सो अमेजोन VPC है हमारे पास, अमेजोन डायरेक्ट कनेक्ट है, अमेजोन राउट 53 है। VPC क्या होता है? लेट्स प्रोविजन अ लॉजिकली आइसोलेटेड सेक्शन ऑफ द AWS क्लाउड वेयर यू लॉन्च रिसोर्सेज इन अ वर्चुअल नेटवर्क। यू डिफाइन full control over the IP range, subnet, route tables, gateway, extend on-premises data centers via VPN or a direct connect. AWS Direct Connect, establishing a dedicated network connections from your data centers to AWS, reduce a network cost, increases the bandwidth throughput, and provides a more consistent network experience than an internet-based VPN. Amazon Route 53, a highly available and scalable DNS web service, routes and end users to the internet application by translating human readable names into the numeric IP address. Also works on the domain registrars. So the tip will be VPC is such a big exam topic. It gets on own full deep dive deck in the next slides. Okay. Storage and content delivery, object, archive, block storage and getting content to user fast. Amazon S3 है, Amazon Glacier, EBS, Storage Gateway, CloudFront, ये सारे storage और CDN है हमारे पास services for the cloud. So S3 is highly durable, is
और स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। ग्लेसियस हमारा सिक्योर एंड ड्यूरेबल्स होते हैं। लो कॉस्ट स्टोरेज के लिए मेन यूज़ होता है। ईबीएस क्या होती है? ब्लॉक लेवल स्टोरेज वॉल्यूम्स होते हैं। स्टोरेज गेटवे क्या होती है? हाँ, ऑन प्रीमाइसेस सॉफ्टवेयर अप्लायंस को क्लाउड स्टोरेज में कन्वर्ट करना with the help of cache, hot data on premises, everything you can encrypt. क्लाउड फ्रंट क्या होते हैं? कंटेंट डिलीवरी वेब सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट अ कंटेंट ग्लोबली विद द लो लेटेंसी and high transfer speeds via network of edge locations. So S3 integrates closely with the Glacier, so you can pick the right resources tier for each workload without re-architecting. डीप डाइव अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सारे पढ़ेंगे। डेटाबेस सर्विसेज में फुल्ली मैनेज रिलेशनल नो एसक्यूएल वेयर हाउस कैचिंग ऑप्शंस होते हैं। एडब्ल्यूएस आरडीएस हो गया, डायनामो डीबी, रेडशिफ्ट, इलास्टिक कैच। आरडीएस है फुल्ली मैनेज रिलेशनल डेटाबेस होता है जो एडब्ल्यूएस हैंडल करता है बैकअप, पैचिंग, मॉनिटरिंग, स्केलिंग, रेप्लिकेशन। डायनामो डी नो एसक्यूएल होता है जो सिंगल डिजिट मिली सेकेंड्स लेटेंसी पे काम वर्क करता है। की वैल्यू डेटा मॉडल है। अमेज़न रेडशिफ्ट क्या एक फास्ट एंड फुल्ली मैनेज है वेयर हाउस है जो मल्टीपल नोड्स की फास्ट परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं। एडब्ल्यूएस क्लासिक कैच या सिंपली डिप्लॉयमेंट स्केलिंग ऑफ एन इन मेमोरी कैचे इन द क्लाउड इम्प्रूविंग अ वेब ऐप परफॉर्मेंस। सपोर्ट मैम कैच, रेडिस इंजन्स सब सपोर्ट करता है। तो आरडीएस क्या है? स्ट्रक्चर्ड और रिलेशनल वर्कलोड है। डायनामो डीबी क्या है? मैसिव स्केल्स है, सिंगल डिजिट मिली सेकेंड्स, नो स्केल्स, know which fits on which scenario. You have to check what the scenario have given to you, उसके अकॉर्डिंग आपको डेटाबेस सर्विसेज यूज करनी है। ओके, मैनेजमेंट टूल्स दैट visibility, automation, and governance across your AWS resources. You have multiple things: AWS CloudWatch, AWS CloudFormation, CloudTrail, Config. So CloudWatch क्या है? मॉनिटरिंग सर्विस है जो एप्लीकेशन कलेक्ट करती है मैट्रिक्स, लॉग, सेट्स, अलार्म्स, राइट। क्लाउड फॉर्मेशंस क्या है? मैनेज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड AWS resources using a JSON based templates, creating and configuring them in a predictable way. क्लाउड रेल्स क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ AWS API कॉल, अपनी API कॉल्स की रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ठीक है। AWS कॉन्फ़िग क्या है? फुल्ली सर्विस प्रोवाइडिंग रिसोर्स इन्वेंटरी, कॉन्फ़िगरेशन हिस्ट्री एंड चेंज नोटिफिकेशन फॉर सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। ओके, तो क्लाउड ट्रेल्स हु डिड व्हाट एंड वन when is autolock. So CloudWatch is how it is performing right now, metrics or alarms. So don't mix up them. Everything is a different, every services are different. You have to make sure in which scenario what is fixed. Okay, what is required on that scenario. On the basis of requirement you have to put. So these are the security and identity services. Who can do what and how your secrets stay secrets. Same as security purpose के लिए यूज कर रहे हैं तो AWS IAM की whatever the IAM rules requires, create and manage user group permission, what permission, authentication, authorization we have to do in AWS IAM with the help of AWS IAM. Okay, AWS KMS क्या है? Manage service that makes it easy to create and control the encryption keys used for encrypted data and all. Okay, AWS directory services क्या है? Let's organize set up and run the Microsoft Active Directory and connect their AWS resources with the existing on-premise Active Directories. Okay, AWS certification management. Let easily provision, manage, and deploy SSL certificates for use of AWS services, removing the manual certification process. Okay, AWS WF क्या है? Web Application Firewall that helps to protect a web application from the common attacks and exploits by letting you define custom web security rules. So IAM controls who can access and what. KMS control how data is encrypted. ये टू डिफरेंट जॉब्स है दोनों की। ये एग्जाम से बहुत कुछ में रिक्वायर्ड है, पूछा जाता है। We will go in deep in next lectures.
Um, Application services, API gateway, Elastic Transcoder, Amazon SNS, SES, SWF, SQS. So all are the building blocks for managing workflows and APIs. API Gateway is a fully managed service to create, publish, and secure APIs at any scale. Like transcoder is media transcoding in the cloud, converting a media files to the format you want to play on phones, tablet, and PC. SNS is contribute and manage delivering the messages. SES is used for sending a translation emails, marketing message. So SWS a highly developers build, run, scale background jobs with parallel and sequential steps. SQS क्या है? Fast, reliable scale message queue service that decouples the components of the cloud computing. So basically, SQS decouples component. SWF track the state of multi-step workflow. If steps takes over 500 milliseconds, then think SWF for reliability. Okay, this is the exam cheat sheet. If you want to log this, you can revise this. This is a cloud computing on demand IT resources, pay as you go. Six advantage: cost, economics of scale, capacity, speed, focus, global reach. Two deployment models, all in cloud based, hybrid, reasons, availability zones. सब अभी हम slides में सीख चुके हैं. So all these are the cheat sheet. Thank you for the chapter 1 is completed. If you like this video, please like, subscribe, and comment AWS. I will fetch this document in a comment. Thank you.